हेलो दोस्तों, ब्रेनियक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी मॉर्गन मैकेंजी। ऑब्जेक्टिव इस थ्योरी को बनाने के पीछे का रहा होगा कि एक्सप्लेन करना कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म ऑन द अर्थ। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि ये प्लेट्स क्या होती हैं। So plates are the massive slab of rocks made up of Earth's lithosphere. Massive slab of solid rocks made up of Earth's lithosphere. And this lithosphere includes crust plus upper part of mantle. ये टर्म प्लेट को कॉइन किया था, सबसे पहले प्लेट टर्म यूज किया गया था जेटी विल्सन द्वारा। सो जैसा कि आपने समझा प्लेट्स क्या हैं। प्लेट्स हैं मैसिव स्लैब ऑफ रॉक्स मेड अप ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। दिस इज अवर अर्थ। अर्थ में ये है अपर लेयर है लिथोस्फीयर की। जैसा कि आपको पता है लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है। फिर लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ओवर asthenosphere. This asthenosphere extends for up to 400 kilometer. Up to 400 kilometer this asthenosphere is extending. जैसा कि पिछली क्लासेस में अपन देखा, this asthenosphere is plastic like that is semi-solid and semi-liquid. This lithosphere is broken into many plates. These plates are floating over the asthenosphere. ये प्लेट्स बहुत ही रिजिड होती हैं और easily these plates do not deform. Yes, these are 50-70 kilometer thick plates, so these plates does not allow easy deformation. These plates only deform in response to very strong force which is acting for a long period of time. Strong plus prolonged. Because of that force, these plates get deformed. There are 7 major plates and many minor plates. 7 major plates, which are Pacific plates, North American plate, South American plate, African plate, Eurasian plate, Australian plate, and Antarctican plate. These are the 7 major plates. Many minor plates are also there like Nazca plate, Cocos plates, etc. But the major plates are these 7. So let's see the plates. In this diagram you can see that this is whole African plate, this is South American plate, this is Antarctican plate, Australian plate, Eurasian plate. So and many minor plates as we have seen, this Cocos plate, Pacific plate, Juan de Fuca plate, Nazca. So how these plates move? So how these plates move? These plates mainly move because of magma. So, and because of the movement of these plates, it results into the formation of mountains. Mountains rise due to the plate movements. Plates movement causes the continents to fracture,
and various other landforms like mid-oceanic ridges, etc. These all are formed due to the movements of these plates. Major plate boundaries formed due to the movements are divergent plate boundary, divergent movement. Second movement is convergent movement, and third movement is transform movement. These are the three plate movements: divergent, convergent, and transform. When the plates move away from each other, this is known as divergent movement. While inverse, when plates move towards each other, this is called as convergent movement. While the plates side pass each other like this, these plates are not moving toward or nor away, but side pass each other. This is known as transforming movement. जैसा कि आपने तीन तरह की प्लेट बाउंड्रीज देखी थी, पहली थी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरी कन्वर्जेंट और तीसरी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. So this is divergent plate boundary. In this, two plates are moving apart. The second boundary, this is convergent plate boundary. Two plates are moving towards each other. Convergent plate boundaries resulted into the fold mountains, volcanic activities, and this is the transform boundary. So let's begin with divergent plate boundary. And the first, as you can see in this figure, this is ocean divergence. In this ocean divergence, lithosphere splits into two and move apart in opposite direction like this, arrows indicating two opposite direction. तो ओशन डाइवर्जेंस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी, मैग्मा जैसे राइज होता है तो फॉल्स क्रिएट होती हैं लिथोस्फीयर में, और ये फॉल्स डिवाइड होके स्प्लिट कर देते हैं लिथोस्फीयर को इनटू टू, and this lithosphere starts moving apart in two opposite directions, and धीरे धीरे मैग्मा पाइल अप होने स्टार्ट हो जाता है on the oceanic floor and resulted into the formation of this elevated structure which we call as mid-oceanic ranges. And when this hot magma comes up through the cracks and solidifies, जब ये इनके से ये हॉट मैग्मा आता है और सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो नया ओशियनिक क्रस्ट को फॉर्म करता है, resulted into the formation of new oceanic crust. And because of the continuous build-up of solid magma, it resulted into the formation of mid-oceanic ridges along a plate margin. And in this plate margin, we observe shallow earthquakes. Shallow earthquakes are observed in ocean divergence. Points to be remember: zone of tension. Here lithosphere splits into two and move apart. In opposite direction. And second point, because of the solidification of magma, when this magma cool downs, it resulted into the formation of new crust, new oceanic crust, and buildup of mid-oceanic ridges. Mid-oceanic ridges are the mountain-like structure. You have heard about the Ring of Fire in Pacific Ocean. It's also a mid-oceanic ridges with associated volcanism or magma, associated volcanic activity. So this is our ocean divergence. And the second is continental divergence. इसमें क्या होता है कि जब मैग्मा अपवर्ड मूव करता है तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को स्प्लिट कर देता है टू इन टू,
parts and lead to the fragmentation of the contents हो जाते हैं and similarly इसमें भी opposite directions में move करने लगते हैं. So in this continental divergence there are three stages. First is intracontinental rifting. First is intracontinental rifting. इसमें क्या होता है, जैसे ही ये मैग्मा अपनी अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्रैक्स जनरेट करता है और अपना रास्ता ढूंढता है, खोजता है ऊपर की तरफ बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, क्रिएशन ऑफ न्यूमरस cracks and faults. So this led to the formation of Rift Valley kind of structure. Example of intercontinental rifting is East African Rift Valley. And the second stage is interplate thinning. Interplate thinning. ये अपनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इस पे इन फर्स्ट स्टेज क्रैक्स को इन्होंने डेवलप कर लिया है जैसे ये. तो सेकंड स्टेज में ये क्या करेगा, इन क्रैक्स को वाइड कर देगा दोनों तरफ से और ये नीचे से मैग्मा आ रहा है. जैसे जैसे ये क्रैक्स वाइड हो जाएंगे तो बीच में सिर्फ नैरो जोन रह जाएगा जहां पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जुड़ी होंगी. बाकी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लगभग टूट चुकी है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगी है. तो धीरे धीरे इस स्पेस में पानी भर जाएगा. जब इसमें समुद्र का पानी भर जाएगा तो इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ नैरो सी इन इट. जैसे हमारा रेड सी है, लाल सागर, रेड सी, जैसा कि आप सब जानते हैं. रेड सी कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन सी विद स्विस कैनाल, जो अक्सर खबरों में रहता है, स्विस कैनाल. तो रेड सी भी एग्जाम्पल है इंटरप्लेट थिनिंग का. इसमें अपन लिख के क्या लिख सकते हैं, इंटरप्लेट थिनिंग, इसमें इट इन्वॉल्व्स पार्शियल मेल्टिंग ऑफ लिथोस्फीयर and gradual thinning of continental crust. Continental crust on both sides. On both the sides. जैसे कि आपने देखा ऊपर और नीचे से ये ग्रेजुअली थिन कर रही है. And when this rift valley widens, gradually this widened rift valley got filled with oceanic water, resulted into the formation of shallow sea. Example, Red Sea. So this is our second stage. And now let's see third stage. Third stage is the formation of mid-oceanic ridges. जैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट स्प्लिट हो गई, इसमें शैलो सी बन गया. जैसे कि आपने सेकंड स्टेज में देखा कि नैरो सी हैज फॉर्म्ड इन because of the continuous spreading of continental crust, and because of the further spreading of this continental crust, this continental crust moves apart from each other. Because of the further spreading, this continental crust move apart each other and the large ocean got formed between it. But because of the continuous eruption of the magma, it resulted into the formation of mid-oceanic ridges. Like we have seen in oceanic plate, these mid-oceanic ridges are formed.
because of the continuous eruption of the magma. Example Mid Atlantic ridge we will see. तो इसमें अपन रख सकते हैं कि continuous spreading of continental crust, हम CC से लिख रहे हैं, away from each other, this led to the creation of new oceanic crust. New oceanic crust created along the Rift Valley because of the rising magma. And this magma pushes continental mass sufficiently apart. And this stage new oceanic basin is formed. Example mid-Atlantic ridge. Mid-Atlantic ridge. चलो मैप में देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अपन ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा है कि दिस साउथ अमेरिका got split from Africa और Africa got split from South America. So this Atlantic Ocean formed because of this continental divergence. This is our Atlantic Ocean. Now our next topic is convergent plate margin. इसमें अपन पहले देखेंगे सबसे पहले देखेंगे ओशियन कन्वर्जेंस। जैसा कि ये डायग्राम ओशियन कन्वर्जेंस का है, जब दो ओशियनिक प्लेट्स कन्वर्ज तो the oceanic plate with higher density subduct below the ocean plate of lower density. This this oceanic plate has lower density while this oceanic plate has higher density. So the plate of higher density subduct below the plate of lower density. And because of this subduction in the asthenosphere, this plate got converted into magma. और इस मैग्मा का कुछ पार्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा एंड ब्रेकिंग दिस ओशियनिक प्लेट्स। जब ये ओशियनिक सरफेस पे पहुंचेगा तो दिस मैग्मा गॉट स्प्रेड एंड रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स। और जब ये वोल्केनिक माउंटेन्स सफिशिएंटली बड़े हो जाएंगे और पानी के ऊपर तक आ जाएंगे तो दीज फॉर्म्स वोल्केनिक आइलैंड्स। तो इन वोल्केनिक माउंटेन्स को वोल्केनिक आइलैंड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स इज जापान। जापान आइलैंड्स, जापान देश, जापान आइलैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस वोल्केनिक आइलैंड्स। और इस जोन को जहां पे ये प्लेट सबडक्ट होती है इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। And because of this subduction, the trenches got formed. Trenches are the deepest part of the ocean. देखते हैं कैसे ट्रेंचेस फॉर्म होती हैं। ये ओशनिक प्लेट है, ये एक ओशनिक प्लेट है। जब ये ओशनिक प्लेट इसके नीचे सबडक्ट होगी, सो दिस पार्ट, ये गहरा पार्ट ओशियन का, इसको ट्रेंच बोलते हैं। सो दिस ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड। Example of trench, Mariana Trench, deepest point in the ocean, deepest trench, Mariana Trench. When these volcanic islands form the chain of islands, so these are known as archipelago. The chain of these islands are known as archipelago. Archipelago is simply, what is archipelago? Chain or group of island is known as archipelago, scattered in the ocean and formed around ocean convergent plate boundary. So लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे? When two oceanic plate converge, then oceanic plate of higher density
subduct below the oceanic plate of lower density. आपको पता है कि लो डेंस मटेरियल फ्लोट्स वाइल और डेंसर मटेरियल सिंक्स, और ये सबडक्ट्स कहाँ पे होता है? एस्थेनोस्फीयर में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सबडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन। दूसरा पॉइंट, दिस सबडक्शन leads to the formation of trenches. Trenches, deepest region of the earth. अर्थ सरफेस के डीपेस्ट रीजन इज नोन एज ट्रेंचेस। और इस सबडक्शन में क्या क्या होता है? दिस सबडक्शन goes deformation, intense melting, compression and metamorphism. And when, some of molten material find its way upward, resulted into the formation of volcanic mountains. On the sea floor, volcanic mountains create over time because of the piling up of magma. Because of the piling of magma, volcanic mountains are formed. और ये जब above the sea level होते हैं तो result into the formation of volcanic islands. Example, subduction of Pacific plate below Eurasian plate. This resulted into the formation of Mariana Trench. Example of volcanic islands is Japanese island, Aleutian island, Caribbean island, etc. तो ये आप ढूंढ सकते हैं. And these subduction zones are the sites of most widespread and intense earthquakes. So this is ocean divergence. Now we see this ocean continental divergence. Now we see oceanic continental convergence. Oceanic continental convergence इसमें क्या होता है? जब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और कन्वर्ज होती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि ओशनिक क्रस्ट इज more denser than the continental crust. So this oceanic crust subduct below the continental crust. और oceanic crust thin भी होती है, तो इस जब ये दोनों ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्स होंगे तो ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर सबडक्ट हो जाएगी. And because of the impact of this convergence on the continental crust, these mountains are formed. And because of the subduction of oceanic plate in the asthenosphere, it resulted into the volcanic activity as this magma finds its way upward on the surface. So, and these mountains are of volcanic origin. Example, Ujjal Salado, Cotopaxi, Chimborazo, these all are volcanic mountain in South America. So इसमें क्या है? ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होगी, ओशन प्लेट सबडक्ट हो जाएगी बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्योंकि ओशनिक प्लेट इज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट.
and because of this the fold mountains formed on continental plate, and these fold mountains are associated with the volcanic activities as this magma finds its way upward. तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया, तो यही लिखना है सिंपली क्या, when plate of oceanic margin collides with plate of continental margin, तो oceanic crust subduct below continental crust, as continental crust is more buoyant, continental crust buoyant होती है, less dense होती है. Example of the subduction, Nazca plate subducting below South American plate. We have seen Nazca plate. दूसरा point, during subduction thick sequence of mountains formed on continental margin. Thick sequence or chain of mountains formed. Example of these chain of mountains we see Andes mountain, Rockies mountain, or because of the subduction trenches are also formed. Earthquakes are observed. Next point, as this oceanic plate plunges deep, it got melted and this magma rises of magma and the start of rise of magma eventually migrating to the surface and the formation of volcanoes or volcanic mountains. Example, Ojas del Salado. This is ocean continent convergence. Now let's see continent continent convergence. ये है अपना continent continent convergent plate boundary. जब दो कॉन्टिनेंट कन्वर्ज होते हैं और both the continents are buoyant, so they do not allow the subduction, तो ये subduct नहीं होते हैं, and when these continental plates converge it does not allow the subduction, it resulted into the partial subduction. partial subduction कुछ नहीं होता, ये दोनों माउंटेन एक दूसरे से स्टिच हो जाते हैं, स्टिच टुगेदर. जब सबडक्शन नहीं होगा तो वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी, और बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दिस compression huge fold mountains are formed, unusually high. Highest mountain peak of the world are found because of this continent continent convergent plate boundary. Example, Mount Everest, highest peak of the world, K2. These all are in our Himalayas. These all are result of the continent continent convergent plate boundary. As you know that India was a part of Australian plate, and when it collided with the Asian plate, it resulted into the continent continent convergence. तो एक पॉइंट और आता है, जब इंडिया ट्रेवल कर रहा था तो टॉवर्ड्स एशियन प्लेट्स, तो इसके बीच में ओशन भी था. ड्यूरिंग continent continent convergence, this oceanic crust complete subduct below the continental crust.
जब ये सबडक्ट हो रही थी ओशनिक क्रस्ट, तब थोड़ी बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटी रहती है, बट एक बार ये कंप्लीटली सबडक्ट हो जाती है तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी सीजेस, दिस वॉल्केनिक एक्टिविटी सीजेस. सो लेट्स राइट समथिंग. नोट्स तो मेन है. पहला ये लिखते हैं, स्टार्ट प्रायर टू कोलिजन ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन, these landmass separated by oceanic plate OP, as these plate converge, as these continent plate converge, sea floors, oceanic plate subducts beneath one of the plate. ऐसा रहता है. When these are converging, below there is an oceanic plates, it subduct beneath one of the continental plate. Then complete subduction and continued. Because of this continued convergence, it resulted into the stitching of two landmass. These two landmass stitched together. इस जोन जहाँ पे ये स्टिच होते हैं इसको बोलते हैं सचर जोन. SUTURE, सचर जोन. This is suture zone. And the further continued convergence forces the continental crust partially under other and creating an unusually thick sequence of intense folding with highest peak. जैसे पहले इन दोनों के बीच में, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में ओशियनिक मार्जिन था, तो अपन जैसे हिमालयस पे हाईएस्ट पीक्स पे अभी भी सेडिमेंट्स, ओशियनिक फ्लोर के सेडिमेंट्स हिमालयस में मिलते हैं. सेडिमेंट्स deposits in the basin between continental margins. Example of this is Himalayas formed because of the subduction. Himalayas formed because of the convergence of Indian plate with Asian plate. So this is our continent convergent plate boundary. So now let's see what are the causes of this plate movement. Causes of plate movement. First cause is convection current. These plates move because of the convection current. See, suppose this is our Earth. This is core, inner core, outer core. In mantle, there are the convection currents is rising from the interior. Like this. This is the convection current rising, and when they encounter the lithosphere, they diverge and spread laterally like this. And when these convection currents encounter the current from opposite direction, they converges like this. So these are the convection current. And because of the divergence like this, because of this divergence, it resulted into the formation of ridges. And when these convection current converge and descend below, it resulted into the formation of trenches. The first cause is convection current. This convection current is generated due to the radioactivity and primordial heat.
Second cause of plate movement is mental plume. Mental plume is simply jets like stream from the core mental boundary. This is core, this is mental. From this core mental boundary, it is like a jet-like stream. This is mental plume, and when it reaches the surface, it also results into the formation of hotspot. Example of hotspot is reunion. Reunion hotspot, because of this the conflict is formed. Second, mental plume. Then other causes can be gravity sliding. Because of the gravity, these plates move. Fourth can be ridge push, because of the rising magma. Ridge push. When the magma rises, it pushes these apart. It is also the cause of the plate movement. So these are the some causes of plate movement. So today, friend, this is for today's class. I hope you find the class productive for your UPSC preparation. दोस्तों, नोट्स बनाते रहें. डायग्राम इज मस्ट अपनी यूपीएससी जर्नी में. और डायग्राम की तो आपको ज्योग्राफी में आदत डालनी है. इट विल फेच यू one extra mark. So keep studying. Thank you. This is for today's class. आज की सेवा यहीं समाप्त होती है. कल फिर मिलेंगे यही टाइम इसी जगह.